Friends, look forward, though the day just, time flew, but we have another gentleman, and last but not the least, but full energy is on. Anuj Aggarwal, please come on stage, please. He is the managing director for Altruist Technologies. They are into, I would say he's a serial entrepreneur and one of the pioneer startup mentors in the Chandigarh and Tri-City region. So Anuj, over to you. You want a hand mic or you good with that? No, I'm okay. Okay, go ahead. Better to keep hands free. So once you are a successful entrepreneur, you want to keep your hands free from every dirty thing. So before I start, like a movie, right? I want to put a disclaimer, right? वो आता है तंबाकू. So पहली चीज कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, आप सब लोग लुधियाना से हैं. And to tell you about finance, it is ulte baaz barevi ko. So you people have mastered the finance thing. You know how to raise money. And one and second, ये सब जो मैं बोलने वाला हूँ काल्पनिक है, मेरी अपनी imagination है, मेरा अपना experience है. I don't say that this is true or something, right? Please put your intelligence if you are implementing it. Okay, so the topic given to me is financing. So to start with, the easiest is to share your own story. How did we finance? So finance के अंदर आपको पैसा raise करना है. That is the problem statement, right? How he said how to break the question. So the problem statement is कि पैसा raise करना है आपको. अब उसके फिर सब questions क्या होंगे कि कितना, किससे, कैसे, right? So पहले तो कितना. So you have to put your business plan on the paper and see how much money you really need. So don't get carried away with कि ये अनुज अग्रवाल है, ये तो 10 लाख ही दे सकता है, तो इससे तो 10 लाख ले लो, चाहे मेरा काम 50 लाख में चलता हो. Don't have 5 people, 10 people fund your project. Have at the max 2 or 3, because जितने इन्वेस्टर्स, जितने फाइनेंसर्स, उतने, not to say in Punjabi but to have English, उतने husbands, right? You know what they say to husbands in Punjabi, right? So minimum number of investors should be there, क्योंकि वो सब आपकी जान खाने वाले हैं. बड़ी पोलाइटली रोज आके आपके साथ ड्रिंक लेके आज एक आ जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा, और कैसा चल रहा है, नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए. सर आपको पता था, आप ही कर लेते हैं, है ना? अब आपने पैसे लगाए, मेरी जान मत लो, लेट मी डू. एंड दे विल मेक श्योर दैट यू फॉल. द रीजन इज कि वो उन्होंने जब पैसा लगाया है ना, उनको फॉर्मूला बड़ा क्लियर है कि 10 में से एक ही चलेगा. तो उनका काम यही है कि 9 को फेल करना है और एक को इतना कामयाब करना है कि वो पूरे 10 की कवरेज कर ले. ठीक है? वो आपको बोलेंगे नहीं पीआर करनी चाहिए, ब्रांड बनाओ इसका. आप अभी कस्टमर वैलिडेशन पे लगे हुए हो, वो आपको कह रहा है कि नहीं नेटवर्किंग करो, इवेंट्स में जाओ. भाई काम कौन करेगा अगर मैं ये सब करूंगा तो? सो यू हैव टू चूज कितना पैसा लेना है, फिर उस पैसे के हिसाब से किससे लेना है. डोंट हैव टू मेनी इन्वेस्टर्स, राइट? अब पैसा किससे लेना है, उसके लिए सस्ता होना चाहिए, है ना? कि इंटरेस्ट रेट, चीप मनी जिसको हम कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव. सो देयर आर 2 मोड्स व्हिच आर बीइंग टॉट इन आवर एजुकेशन सिस्टम आल्सो. वन इज debt and second is equity. Which is cheaper? Debt. Why? More risk. In equity is more risk and debt less. Yes. So जो बंदा आपके साथ रिस्क में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपसे ज्यादा रिटर्न मांगेगा. ठीक है? एक तीसरा भी पैसा होता है जिससे हमने अपनी कंपनी बनाई, जो वापस नहीं करना होता. पापा मनी, पिताजी का पैसा, बापू का पैसा पुत्रा ऐश कर ले पुत्रा. So the day we started business, my father got retired, so he had some money. रिटायरमेंट का पैसा आया उनका. My mother also got premature retirement, उनका थोड़ा पैसा आया.
मेरे ब्रदर वाज वर्किंग, तो उसके पास कुछ इक्विटी थी उस कंपनी में जिसमें वो काम कर रहा था, वो भी हमने बेच दी। तो सब जगह से पैसा इकट्ठा किया और बिजनेस शुरू कर दिया कि अब ये पैसा वापस तो करना नहीं है, उन लोगों का ही है, आराम से करो, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं। आज की जनरेशन जो है ना, इस जो फंडिंग को है यूज ही नहीं कर रही है। दैट इज द प्रॉब्लम। पिताजी के पास करोड़ों पड़े हैं, पर वो एक उस आदमी के पीछे चक्कर काट रहा है जिसके पास 10 लाख रुपए हैं। क्यों? पिताजी डांटते हैं। बट अगर आपका आइडिया आपके पिताजी को समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको नहीं कन्विंस कर पा रहे, तो किसी से पैसा मत लो भैया, क्योंकि उस आदमी से अच्छा आपको कोई नहीं जानता। अगर वो कह रहे हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो ठीक है। एंटरप्रेन्योर वही है जो बचपन से अपने पेरेंट्स को ठीक ठाक घुमा लेता है। ठीक है, रोज पिताजी बैठे होते हैं शाम को घर पे, के आज आने दे, आज सारी की टारगेट होगी, और फिर जब आप पहुंचते हो पिताजी बड़े कूल हो जाते हैं। सो दैट्स द टैलेंट यू नीड इन एन एंटरप्रेन्योर। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड कम फ्रॉम हिम विच इज नॉन रिफंडेबल। ये एक चीज समझ लो कि सबसे कम वो ही मारेंगे अगर पैसे डूब गए तो, दुनिया बहुत मारेगी। ठीक है, एंड उससे ज्यादा वैलिडेशन कोई नहीं कर सकता आपकी वैलिडेशन, सीरियस आपके प्रोडक्ट की वैलिडेशन। हम आज 500 करोड़ का धंधा चलाते हैं, अब भी हर डिसीजन अपने पिताजी से लेके करते हैं, जबकि वो कोई डिसीजन नहीं देते। वो हर बात में ये कह देते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगता है कर लो, पर हमें लगता है कि अब हमने जो भी कर लिया ना वो ठीक हो गया। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज नॉन रिफंडेबल। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, वो आपने एक बार कर लिया, नाउ यू नीड बिगर मनी विच इज नॉट अवेलेबल विद योर। सेकेंड शुड बी it should come from your friends, family, right? There are some people जो बोलते हैं friends, family and fools, right? कि कुछ शहर के अंदर पागल लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उड़ाने के लिए घूम रहे होते हैं, उनको ढूंढो और उनसे ले लो, राइट? बट आपको पहले अपने आइडिया को चेक करना है। इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ द सक्सेस, then it should come from friends and family, because you want to share the profits with them. You are very sure, but if you are not sure, आपको खुद ही 99% मन के अंदर लग रहा है ये तो डूबेंगे, then you can't go to them, right? Because एक तो आपके पैसे डूबेंगे और एक रिलेशन खराब होगा। So all these questions you have to put it on a paper, do a SWOT analysis. You know SWOT? Yes, sir. What is it? राइट, सो इट्स ये ब्रह्मास्त्र है SWOT जो है। किसी भी सिचुएशन में आपके घर की डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, बिजनेस प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट, करियर, कोई भी प्रॉब्लम हो, SWOT लगाओ, पेपर पर रख के आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट वुड कम आउट वेरी क्लियर इन दोज 4 लाइन्स, राइट? सो दिस इज देयर। और फाइनेंसिंग के अंदर क्या कवर कर सकते हैं हम? एनी क्वेश्चंस? हाँ, तो ऐसे एक सेशन से मैं बाहर निकला तो एक लड़की आई, कहती सर मेरे को ना बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, पर हर एक में इतनी फंडिंग की जरूरत होती है जितने में कभी सोच ही नहीं सकती। भाई बड़ी यूनिक प्रॉब्लम है आपकी। तो मैंने उससे एक चीज पूछी, मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड ड्रीम? बताओ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडिया एंड अ ड्रीम? An idea is that you can take up forward. Dream is only a dream. It's not real. So you are using dream in the definition of dream and you are using idea in the definition of idea. So it doesn't help. So वो जो अच्छे वो बंदे होते हैं वो डेफिनेशन देते हैं, ड्रीम आप बंद आंख से देखते हैं, आइडिया आप खुली आंख से देखते हैं।
तो बट ये नहीं है, what he said is the right, कि जो आप अचीव कर सकते हैं वो आइडिया है, जो आप अचीव ही नहीं कर सकते वो ड्रीम है। तो मैंने मैडम को समझाया, मैडम आप ड्रीम्स देख के आप उनको समझ रहे हो कि वो आइडिया है, दोज आर नॉट आइडियाज, दोज आर ड्रीम्स, जिनके साथ आपको आइडिया तो उससे आएगा ना, यू राइट व्हाट इज अवेलेबल टू यू, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. So the way you asked whether you should go for an e-commerce portal for weddings, sorry. So you have to put your strengths over there. Are you very good at arranging weddings? Are you very good developer in customer interface? Are you a Google that you can promote a new portal, right? Google भी Orkut नहीं चला पाया है ना? But customer insight जो है, that is the most important. So आपको वो sort करना पड़ेगा. Then if you have two ideas, one for which you have internal funds to fund it, and second for which you need to raise, then which one you should go for? Internal. But इसके अंदर return कम है, इसके अंदर return बहुत ज़्यादा है. फिर Start with internal, then to external. हाँ? Start with internal, then to external. हाँ. Basis. तो आज इसको शुरू करो. Bring this on an autopilot mode, right? So that you have something to bank upon, and then get into it. Don't get fascinated with this. आजकल क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपने रेज कर दी, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, सक्सेस हो गई. रादर इट हैज कम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहले तो सिर्फ आप अपने आप को जवाब दे रहे थे, अब उस बंदे को भी देने जिसके पैसे लगे हैं, राइट? So first try to achieve it through your own internal funds generation or family, parents, where you don't have to return the money. If it is not, right, then go for it. But this comes with the prohibition, right? Cigarette smoking is injurious to health. It causes tuck, 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 tuck. Thank you. So, very common question. How do you decide that, is it time for, angel investment or, say, institutional, VC kind of investment? How do you choose between the two? So as which per one to go after? So as per definition, it is very clear that angel is before you start the business, and VC is once your business has proven the model, the revenue model is in place, you want to scale it up, right? This is the basic difference. But again, it depends. If you know a VC, right, who is close to you, and he is not into angel, but he is the only guy you know, there's no harm, right? You just have to make it clear to him that you are still on the angel, and if he likes, if it excites him, then you should go for it. It's not that there is a very hard line between that. If a person is in VC stage, he won't do the angel. There is a very, very thin line between the three. Yeah. Anuj, can the startups here aspiring approach you for assistance on how to get funded? Anytime. So we work out of Panchkula, Mohali, ID Parks, and whoever, whenever is there in the Tri-City is most welcome to visit us, and we'll take you through the whole setup. And yeah, sure. Yeah, it's a very general question I'm going to ask. Basically, since being a non-techie guy, if you have an idea, you know that it can work out, and you have validated it with few of your customers. So now the system comes that you want to go to a tech person and you want to invest a lot of money, because he said your budget is of 10 lakhs. So how can you authenticate those 10 lakhs are, because you don't understand that coding and language. So how can you authenticate? This is the main problem which you face while validating your any idea. So that is the problem. I agree, right? So getting work out of a technical guy and estimating is very, very difficult. We have 500 technical guys working with us, but we still struggle with them in the sense we are at their mercy, right? Finally, every senior employee has to call me in, sir, आप ही बोल दो इसको तभी होगा वरना नहीं होगा. So that is a problem, and you really can't estimate how much time will it take.
So there's a beautiful story behind it. Okay, there was a guy sitting in the office and chatting with another girl on the other side, and suddenly he stopped. Just wait for a minute. तो बॉस आया, बॉस ने बोला यार एक प्रोग्राम लिखना है 2+2 का, तो उसका आंसर आ जाए. तो उसने कहा सर ये तो सोचना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, वैसे देखता हूँ सोचता हूँ, तो 3-4 दिन में मैं आपको बता पाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा ये लिखने में. तो उसका बॉस चला गया यार थोड़ा जल्दी है, देख ले कुछ कर ले. तो देन ही अगेन स्टार्टेड चैटिंग. सडनली द गर्ल ऑन द अदर साइड सेड के 2 मिनट रुक. तो उसका बॉस आ गया. तो देन शी केम बैक ऑन द चैटिंग एंड दे स्टार्टेड चैटिंग अगेन. तो कहता क्या हुआ? कहता बॉस आया था, बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम दे गया कि 2+2 का कोड लिखना है यार, समझ में नहीं आ रहा. वो कह रहा ये पढ़ा यार, ये ले ठाक कर. क्या अभी तो मैं तेरी सीट पे आई थी, तू कहता 4 दिन बाद बताएगा. So those are real stories. अगर धुआं है तो आग तो होगी. So what I would suggest, right, since you are working on a technical product, right? So technology would be involved for long term in your business, right? So you should take one technical guy as a partner, right? Lot of them are available. All people are looking for entrepreneurship. So if you have a tested, tried business model in place, but you don't have a technical know-how, so take a technical guy who is good friend of yours, tried and tested, right? Keep an exit option open with him. Okay, boss, 3 महीने काम करेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर, नहीं अच्छा चलेगा तो ऐसे ऐसे करके हम एग्जिट कर लेंगे. Then do the partnership when you are very, very comfortable, right? But I think it will be very difficult to do work all alone on this, right? You should have a very good team in place. Entrepreneurship is not about one person. While you need a lot of people to start with also. And on the budget, 10 lakhs, what you said. So if you have 20, so if somebody is quoting 10, then keep 20 aside for him. Then give okay for 10, right? Because in technical, most of the time, once it is near completion, you get second thoughts. This was not the way, this is not the way, right? We should get this way done, that way done, like the way, a lot of iterations you need to do. So you should have double the budget and then start the project. The reason being why I'm asking is like we had an idea about pet management. That is like we have divided it into the 3 phases that ultimately people would be discussing about their pets like a social media thing. Like a social media thing on pet management. Pet. Pets, Okay. yeah. Okay. 4 legs. So like we have taken a quotation from 3 of the best companies in Delhi. So one was like 15 lakhs, one was 20 lakhs, and another was like 45 lakhs. So all are providing the same thing. Everything is same. Since like we can't able to figure out what is the difference, और हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं उनसे पूछ पा रहे थे. So I'll tell you, I know several companies which have been started by non-technical founders. The way some of the companies in US have solved this problem is they will actually have a technical advisor on board, and these technical advisors are like very, very expensive. So you don't pay them by money, but you pay them with like 0.5% of your company or 1% of your company, and that person is somebody who is invested in you, and not like invested in terms of money but in time, and that person will help you make some of those decisions. So if you are a technical person, you should have a business advisor. If you are a non-technical person, then you should have a technical advisor, and that is a very small cost to pay, like 0.5% to 1%. If you then that person will tell you ki this is the difference between 10, 15 and 45, and that person will also say ki given the stage at which you are at, you should go with the 10 one and you should go with the 40. So that is one way I have seen people solving this problem. So again, I am a very negative person, right? So the disclaimer I shared with you. So whoever you hire, right, you should be better than him. That is the basic formula of entrepreneurship, right? You should know more finance than your chartered accountant. You should know more, you should have more common sense than your CTO, that how to solve a technical problem. Otherwise, your project would, I don't see a chance of winning over there. You need to dirty your hands yourself. But
you can't be perfect in every field. Yeah, not perfect. I'm not saying you don't have to do everything yourself, but the common sense, right? You can't surrender to anyone in entrepreneurship. How can you think that somebody with 100 times, 1,000 times, lakh times more intellectual than you, but with 0.5% equity would do much more justice to your setup than you yourself with 99% of equity? That is, again, my personal, sorry. Yeah. Don't you think trust? Don't you think trust? Yeah, then make the team of partners on faith and trust. That is very, very important. So we, in our organization, 14 of our cousins work, right? So trust is taken for granted. If trust goes wrong, then it goes wrong for a long, right? Then nobody can save us. But yes, a reasonable trust is taken care of. Trust is very, very important. Thank you, Anuj.